Oh, where are you going? Said reader to rider. The valley is fatal when furnaces burn. Yonder's the midden whose odors will madden. That gap is the grave where the tall return. Oh, do you imagine, said fearer to fairer, that dusk will delay on your path to the pass? Your diligent looking discover the lacking, your footsteps feel from granite to grass. Oh, what was that bird? Said horror to hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. Out of this house, said rider to reader. Yours never will, said fairer to fearer. They are looking for you, said hearer to horror, as he left them there, as he left them there. Welcome to English Keys Academy, dear students. Today we are going to study this beautiful poem, Oh, Where Are You Going, written by W.H Auden. Now, basically, in this poem, the poet has given us three different scenarios. In the first stanza, the scenario is that there is a person who is going out of his house. There is a person who is going out of his house, and there is another person who is a person who is a loser, who is trying to discourage that traveler. He is trying to trying to frighten that rider and says, "Oh, where are you going?" said reader to rider. Now, reader is the first person who is a loser, who is a fearful person, who is a weak person, and he is talking to rider and he says that, "Oh, where are you going?" said reader to rider. That valley is fatal when furnaces burn. Now he tries to frighten him and says that that valley, the place where you are going, is fatal, is very dangerous when furnaces burn. Like when the difficulty arrives, furnace bhatti ko bolte hain, a place that is used to ignite fire. To burn things. So the reader says to writer that that valley is fatal. The place where you are going is a very dangerous place. Yonder's the midden. Midden means the waste material, कचरा जिसको हम बोलते हैं. Yonder's the midden. That place is full of trouble. That place is full of garbage. That is a very dirty place. That is a very filthy place, whose odors will madden, and the bad smell of that garbage will madden you. You will be mad because of the bad smell of that place. So basically, the reader is trying to frighten the rider, a person who is going outside. So the reader is trying to frighten him, and reader says that that valley is fatal. The place where you are going is a very dangerous place, and there is a collection of garbage, and that garbage is going to make you mad because of the bad smell. And then in the last line of the first stanza, the reader says, these are the lines by the reader. Okay, in the last line, the reader says that that gap is the grave. Like the place where you are going, there is a gap. Okay, there is a gap, and when the reader talks about the gap, the reader says that that gap is the grave. That gap is like a grave where the tall return, कि जहाँ से बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी वापस आ जाते हैं. That gap is the grave where the tall return. So basically, in the first stanza, there is a person, okay, who is a loser, who is a weak person, who is a frightened person, and that frightened person is trying to frighten another person who is going for a journey. In the next stanza, the situation is different, the scenario is different, and again there is a question. Oh, do you imagine? Said fearer to fairer. Fairer means again the traveler. Like there is another character, not the reader but another character. Okay, again this stanza is between this stanza is also a question that is asked by a person to another person, and the person who is asking the question is fearer, a person who is fearful. एक डरा हुआ आदमी जो है वो सवाल कर रहा है किससे? टू फेयर, मुसाफिर से वो क्या कहता है? ओ डू यू इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट. उसको कह रहा है कि ज़रा ख्याल तो करो. द डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास. टू द पास मीन्स टू द बॉर्डर. तो वो उसको कह रहा है कि द डस्क, द नाइट,
विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे और उससे पहले रात आ जाएगी. योर डिलिजेंट looking discover the lacking. You're diligent, you're careful. Diligent means very careful, very full of hardship. तो वो कह रहा है कि जो तुम इतनी मुशक्क़त कर रहे हो ना, you're diligent. Looking means your search. You're very careful and you're very difficult search will discover the lacking. Like इतनी मेहनत करोगे तो उसके नतीजे में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा. Your footsteps feel from granite to grass. Again a fearer is asking to a fairer, ठीक है. Fearer a person who is frightened, fairer a person who is a traveler, who is going for a traveling. तो वो जो डरा हुआ आदमी है वो उसको कहता है कि ओ डू यू इमेजिन, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें रास्ते में ही रात आ जाएगी और तुम्हारी जो इतनी मुशक्क़त के साथ जो तुम तलाश करोगे तो तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा. योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास. ग्रेनाइट मीन्स वेरी हार्ड प्लेस, लाइक अ स्टोन. तो कह रहे हैं कि क्या तुम पथरीली ज़मीन और घास और इस तरह की सारी जो जगह होंगी, क्या तुम उन पर चल पड़ोगे, क्या तुम ऐसी जगहों पे से गुजर पाओगे. तो अगेन इन द सेकंड स्टैंजा देयर इज अनदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू फ्राइटन अनदर पर्सन. इन द थर्ड स्टैंजा अगेन वी हैव अ डिफरेंट सिचुएशन. ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर. ठीक है, देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू लिसन टू समथिंग एंड देन देयर इज हॉरर, खौफ. जब आप मतलब इसमें आप इस तरह से देखें कि एक आदमी है जो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है और खौफ जो है वो उसके कानों में एक आवाज़ डालता है. ओह व्हाट वाज दैट बर्ड, ये परिंदे की आवाज़ कहाँ से आई है. डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज. हेयर द सिचुएशन इज़ वेरी ग्लूमी, द सिचुएशन इज़ वेरी आई वुड से दैट फियरफुल सिचुएशन. बड़ी ड्राउनी सी किसी हॉरर मूवी का सीन जो है वो यहाँ पर लगता है. ओह व्हाट वाज दैट बर्ड, ये परिंदा कहाँ से आया. डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज. ट्विस्टेड ट्रीज के ऐसे मुड़े हुए दरख्त हैं, तो उन ट्विस्टेड ट्रीज के अंदर एक खौफ है जो किसी आदमी को के जहन में एक बात डाल रहा है कि वो देखो वो रात का वक्त है, तो वो देखो वो जो दरख्त ऐसे करके मुड़े हुए हैं, उसके अंदर से एक परिंदा, क्या वो तुम्हें नज़र आ रहा है. और आगे वो कहता है बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली. Here the horror tries to frighten the person with an image of a ghost. ठीक है, वो उसको कहता है कि behind you, तुम्हारे पीछे से swiftly, बड़ी तेज़ी के साथ, the figure comes softly, तुम्हारे पीछे से एक कोई जिन है, तुम्हारे पीछे से कोई चीज़ है जो ऐसे करके आ रही है. The spot on your skin is a shocking disease. और उसको कहता है कि ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है. ठीक है, is a shocking disease, ये तो किसी बीमारी का निशान है. So basically in this stanza the poet says that the horror खौफ जो है वो एक किसी आदमी से मुखातिब होकर उसको डराने की कोशिश कर रहा है. And in the last stanza, three different situations. In the first situation, there is a reader who is trying to discourage, who is trying to frighten a rider. And in the second situation, there is a fearer, एक खौफज़दा आदमी है, who is trying to frighten a fairer, एक मुसफ़र करने वाले आदमी को डरा रहा है. And in the third situation, there is a person who is full of horror, एक डरा हुआ आदमी जो है वो किसी दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है. In the last stanza, in each line there is answer for each person. So basically there are 4 lines in the last stanza, and in first line in first line जब वो पहले stanza में वो पूछता है ना कि oh where are you going, तो लास्ट स्टैंजा की पहली लाइन में उसका आंसर है. सेकंड में जब वो उसको पूछता है कि ओ डू यू इमेजिन, तो सेकंड लाइन में इसका आंसर है. और जो थर्ड लाइन है उसमें जब वो कहते हैं ना कि ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज. तो इन तीनों जो क्वेश्चंस हैं इनका लास्ट स्टैंजा की पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में इसका आंसर है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओ वेयर आर यू गोइंग, and the answer is out of this door, said rider to reader, yours never will. वो जब उसको कहता है ना कि सेकंड लाइन में, ठीक है, कि ओ डू यू इमेजिन that dusk will delay on your path to the pass, your diligent looking discover the lacking, your footsteps feel from granite to grass. तो कहता है कि क्या तुम्हारे कदम जो हैं वो सख्त और नरम जगहों पर चलने के काबिल होंगे. तो सेकंड लाइन में वो उसको जवाब देता है yours never will, said fairer to fearer. कहता है मेरे होंगे या नहीं, तुम्हारे कभी भी नहीं होंगे.
क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम इस रास्ते के ऊपर चल पड़ो। तो पहले में जब वो उसको पूछता है कि ओ वेयर आर यू गोइंग, तो उसको कहता है कि आउट ऑफ दिस हाउस, कि मैं इस घर से बाहर जा रहा हूँ, सेड राइडर टू रीडर। एंड इन द सेकंड लाइन वो उसको कहता है, जब उसको पूछता है कि तुम्हारे कदम क्या इतने काबिल होंगे, तो वो उसको कहता है योर्स नेवर विल सेट फेयरर टू फियरर। और फिर जो थर्ड स्टैंजा था उसमें जब उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, वो कहता है कि एक कोई भूत है जो पीछे से आ रहा है, तो वो उसको कहता है कि दे आर लुकिंग फॉर यू, वो भूत तुम्हें ढूंढ रहा है, मुझे नहीं ढूंढ रहा। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हियरर टू हॉरर। जो सुनने वाला था उसने खौफजदा इंसान को कहा कि दे आर लुकिंग फॉर यू एज ही लेफ्ट देम देयर। और वो जो ट्रैवलर था वो उनको, उन खौफजदा इंसानों को, उन डरे हुए लोगों को, उन कमज़ोर लोगों को, उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में स्टेप नहीं ले सकते, उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, तो उन लोगों को जो राइडर था, जो फेयरर था और जो हेयरर था, वो उनको ये सारी बातें कहता हुआ एज ही लेफ्ट देम देयर, और वो उनको वहाँ पर छोड़कर चला गया। सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस पोएम इज दैट इन योर लाइफ यू फेस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिस्करेज यू, हु आर ट्राइंग टू demotivate you, who are trying to frighten you for no reason. But the idea that this poem gives us is that you never have to listen to those people. You don't have to pay attention to whatever they say. You have to stay on your path. You have to keep working for your goals, and you have to have belief in yourself. You have to have belief in yourself. आपको अपने आप पर क्या करना होता है, यकीन करना होता है. So the poem is a dialogue between two imaginary persons personified as reader and writer. The writer is a bold and courageous person, ambitious to make his way through thick and thin, and the reader, full of awe and reverence, tells him that valley beyond is dangerous, and the heap of dung and rubbish lie on his journey ahead, whose bad smell sickens and maddens the mind. So this is basically the theme of this poem. Acha, the opposite force is working to discourage the traveler from going farther and farther. Fear and horror try to discourage the rider from going on his path to the pass. The way to glory and success is vague and uncertain, but it can be paved through with courage and perseverance. So this is the basic theme of this poem. Poet का introduction हम poem number 1 के अंदर भी पढ़ चुके थे. So this is it for today. That's it for today. In next class we will explore another piece of literature. We will be talking about some other poem. Till then, take care of yourself. Khuda Hafiz.